So yesterday in ovarian cycle, there are some important points that we had discussed. The first thing in ovarian cycle is what is the definition of ovarian cycle? What is the definition of ovarian cycle? Bipasha? Yes, ma'am. Ovarian cycle, how will you describe it? What does it mean? The cycle changes in ovary after puberty constitute ovarian cycle. Okay, good. So all those changes, the cyclical changes, we call it cyclical because it is not that once it happens and it doesn't happen lifetime. It happens every month, right? So it is rightly called the cyclical change. So cyclical change that happens in the ovary is called the ovarian cycle. Okay, and then next thing, what are the two phases of ovarian cycle? Nidhi Maurya is there. Nidhi Maurya. What are the two phases of ovarian Yes, cycle? ma'am. Yes. दो phase क्या हैं? What are the two phases? Follicular phase and lat latency phase. ध्यान से देखो क्या है? Follicular phase और For follicular phase and what is the next one? Luteal. luteal हाँ, luteal phase. LUTEAL. ठीक है, वो ल्यूटेनाइजिंग Luteal हार्मोन, phase. वो सब के बेसिस पे याद रखो कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जब आ जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, देन इट एंटर्स इनटू द luteal phase. ठीक है, ओके. देन व्हाट वी हैड अंडरस्टूड दैट when follicle stimulating hormone increases, what happens next? Suman? Follicle stimulating hormone is released, then what happens? Deepak Joshi. मैम स्टूमुलेट द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स. जब मैम बढ़ता है मैम एफएसएच. Very good. It stimulates the growth of follicles, right? Then we saw that the follicles themselves, they are also producing estrogen, and under the influence of estrogen, what happens to the follicles? Almost 15 to 20 of them will be trying to grow, but one among them becomes matured and it becomes a Graafian follicle, right? Graafian follicle. Very good. Now estrogen, when it increases by maximum level, then it stimulates the release of which hormone? Mahi. Okay, I'll go roll number wise only, then I'll not know otherwise person. Adarsh is there? Yes, ma'am. So my question is, if estrogen increases,
and reaches Yes, ma'am. maximum, it stimulates the release of which hormone? Ma'am, LH. Ma'am, luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Very good. Hormone. Huh. So this next person. Ma'am, can I mute? Yes. Next person, Akansha Kumari. Akansha Kumari is there? No, no, ma'am. Okay. Next question I'll ask, then I'll ask. Next is, what is this type of feedback called? Anchal Gautam. Ma'am, Please. positive feed. Yes. Why we call it positive feedback? Ma'am, because there is a sudden increase in secretion of luteinizing hormones. Yes. Can you give an example of negative feedback of estrogen? No, ma'am, I am not able. If you remember, we had studied functions of ovary. Students, in that we had studied that Yes. high levels of estrogen inhibit the production of follicle stimulating hormone. ठीक है? Okay, good. अब उसके बाद में once LH comes into play, ovulation occurs, right? This causes rupture of follicle and the oocyte is removed. What happens? हमारा है नर्सिंग डायग्नोसिस का गुड मॉर्निंग मेट्रो हॉस्पिटल गुड मॉर्निंग मेट्रो हॉस्पिटल This is the most interesting thing that could have happened. Okay. Once the ovulation is over, then what happens? Ovulation होने के बाद क्या होता है students? What happens to the follicle? You all are there? Yes, ma'am. Ma'am, rupture of graphene follicle on the 14th day of cycle. Okay. That is ovum is released, and then what happens to it? What Yes, ma'am. happens to the remnant of it? Ma'am, it goes into fallopian tube. Very good. है ना? Follicular phase खत्म हो जाता है, and it goes into the luteal phase. Okay. Yes, ma'am. आंचल और अंजलि ने आंसर कर दिया? मैम अंजलि ने गुंजन ने किया है अभी. Okay. Good. Now Anjali. Anjali is Ma'am, she there. is absent. Anjali She is Sharma. absent. Both the Anjalis. Yes, ma'am. What about Ayush? Absent. Yes, ma'am. Ma'am, it's present. Ayush. 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 बिपाशा को क्वेश्चन पूछ लिया. चंचल कुमारी गौतम. Yes, ma'am. Luteal phase, the initial thing that has to be understood, luteal phase begins after ovulation. What happens to the wall of the ovarian follicle?
Ma'am, the wall of ovarian follicle collapse and fold. So this wall from here it folds and this closes. है ना? Then what is the Yes, ma'am. Okay, next person. दीपक जोशी ने आंसर कर दिया है. दीपक सिंह is there in class? Absent, ma'am. Okay. Devyani Chaudhary. Yes, ma'am. My next question is, what gives the yellow color to the corpus luteum? Yes. येलो कलर किस वजह से हो जाता है ये? Yes, We ma'am. had studied about some pigment that is present in it, in the granulosa cells. What are those pigments called? Okay, I'll give you next chance. Devyani, Dheeraj, where is Ma'am, there? ma'am, cytoplasmic carotenoids pigment. Very good, very good. है ना? Cytoplasmic carotenoid pigment, which is called lutein, right? Now, this particular corpus luteum, it next person, धीरज वैद है. Next, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Dheeraj is there. Good. Dheeraj, what is produced by this particular corpus luteum? Which hormone? मैम Which एक्चुअली मैंने क्लास नहीं ली थी फ्रेंड से, इस वजह से ये इसका नहीं पता मुझे. बट अभी तक जो रिवीजन चल रहा है वो समझ में आ रहा है? यस मैम. Otherwise, refer these things on YouTube. Na same classes will be posted on YouTube. ठीक है? Okay. फातिमा रेहान, Yes, ma'am. क्या रिलीज होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम से? Progesterone. वेरी गुड, है ना? प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो जाते हैं. देन वी सॉ दैट इफ प्रेगनेंसी अकर्स, 3 से 4 महीने तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है. बट इफ प्रेगनेंसी, दैट मीन्स दिस ओवम, if it doesn't meet sperm and the zygote doesn't get implanted in the uterine cavity, that means pregnancy doesn't happen. Then what happens to corpus luteum? Next person, गुंजन ने आंसर कर दिया ना. इशिका मैसी, ये देखे जाना. इशिका मैसी, जतिन, आदर्श. Absent, इशिका ma'am. है. आदर्श कहाँ गया? No, ma'am. Ishika is not there. Jatin Anand. Ma'am, she is there but not responding. Pardon? Ma'am, not responding. Ma'am, she is present but not responding. Okay. That means code blue has to be activated. Message to भेज दो इशिका मैसी. Ishika Messi, send a chat if you are not able to type it and send. Ishika. Okay.
If she is not responding, she will get the same this thing. 1 minute. Ishika. गॉन. दत्तनानंद नहीं है. जूली. जूली ने आंसर किया है. Yes, ma'am. जूली. What happens to the corpus luteum if there is no pregnancy occurring then? Ma'am, regressing rapidly after 24th day. Regressing. 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 Regressing word का Regressing, yes, मतलब क्या है? Regress करना उसका मतलब क्या है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसका साइज देखो, छोटा हो रहा है ना? मैम स्मॉल. यस मैम, स्मॉल हो रहा है, वो ब्रेक हो जाता है मैम, धीरे धीरे छोटा हो जाता है. छोटा छोटा ऐसा है ना, एकदम ऐसा हो जाता है. और ये जो येलो कलर देख रहे हो, अब वो येलो कलर नहीं है. नाउ इट हैज बिकम white, right? So Yes, what is ma'am. it called then? Corpus albicans. Okay, okay, okay. ठीक है, right? This much we had discussed yesterday. Let us start with this topic of the uterine cycle. We are going to discuss the uterine cycle, which is also called menstrual cycle. Some of these all are very favorite question in university exams. Okay, so it comes as long answers. You are expected to draw the whole diagram, describe the whole thing. So in this, the first thing that we have to understand about menstrual cycle or uterine cycle. So as we had understood there in the ovarian cycle, here also the main meaning that we have to understand is the cyclical changes in the endometrium of uterus in response to ovarian hormones. Okay. So where is it happening? The cyclical changes in the Endometrium. Okay, it is happening in the endometrium. Okay, so endometrium of the uterus, and this is in response to ovarian hormones. Ovarian hormone. What are the two ovarian hormones we have studied, Kanika Joshi? What are the two hormones we have studied? Adarsh. May I? Who is this? May I? Ma'am, May I? ma'am, follicle stimulating hormone and luteal hormone. Luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Luteinizing hormone and the follicle stimulating hormones are specially what? Progesterone and estrogen. हाँ, दोनों कंफ्यूज मत करो बच्चों. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या थे? किसके इन्फ्लुएंस में सीक्रेट होते थे? मैम ओवेरियन साइकिल. हाँ, ओवेरियन साइकिल में आपने पढ़ा है 2000 व्हाट इज इट? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है ना. We are talking about directly now ovarian hormones also, है ना. Those are there. और ओवेरियन हार्मोन्स में हमने कौन कौन से देखे? मैम प्रोजेस्टेरॉन एंड क्या बोलते हैं एस्ट्रोन. हाँ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. Okay, so now this much once the description is over,
The next thing is you have to mention the phases of this menstrual cycle. Okay, you have to mention the different phases. What are the phases? One is proliferative phase. Okay, the first one is the proliferative phase. The second, as you see here also, see, proliferative phase is the first one. Then secretory, फिर menstrual, followed by, we call it a cycle. So it's the same way, proliferative, secretory, menstrual. Got the cycle? First phases we are just understanding. ठीक है, उसको ऐसे आप समझ सकते हो कि प्रोलिफरेट होना उसका मतलब क्या है, धीरे धीरे जो ग्रो होता है ना, जो proliferate होता है means it is growing, multiplying, proliferating, and then is the secretory phase. फिर ready होने के बाद में आपका menstrual phase. Now let us see one by one what are these phases we are talking about. The first one is also known as follicular phase. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है. Yes, students, this phase is coinciding with which part of the ovarian cycle? अपूर्वा, ये जो फेज है प्रोलिफरेटिव फेज, उसी टाइम ओवेरियन साइकिल में कौन सा फेज चल रहा है? मैम में आए अपूर्वा इज नॉट देयर. मधु, Yes, ma'am. अब अपूर्वा है, मधु है. Ma'am, Apurva Yes, is ma'am. not there. Okay, Madhu. So Madhu, my question is, यूट्राइन साइकिल में जो प्रोलिफरेटिव फेज है, ये ओवेरियन साइकिल के किस फेज के साथ साथ चल रहा है? उस टाइम ओवेरियन साइकिल में कौन सा फेज चलता है? Follicular phase. Yes, very good, है ना? So you can see here also in the diagram, the demarcations are shown very clearly. This is the time which is called also follicular phase. ठीक है? This phase is followed by what? किसके बाद आता है? menstrual phase. Menstrual phase. ठीक है? This comes after the menstrual phase. So this way you have to describe it. When you describe it so clearly, then only your examiner will be able to understand that you have a clear idea of it, that this proliferative phase is also called follicular phase and it follows the menstrual phase. Okay. Now there is generalized proliferation, active proliferation of endometrium, which grows from 1 to 3 millimeter. ठीक है? On a scale, you know how much is 5 millimeter, 10 millimeter, 1 centimeter. तो उस हिसाब से आप देखो, अनुमान लगाओ कि there is generalized proliferation. ये आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये proliferation इस तरीके से हो रहा है and it goes up to 1 to 3 millimeter. ठीक है? It is going up to 1 to 3 millimeter. The uterine glands, all the uterine glands increase in length and remain straight. Okay, all the uterine glands, here you can see these things that you are seeing, these all are actually denoting the glands. Okay, these are the glands.
Besides that, there are this each between the glands, whatever area you are seeing, are being supplied by vein and arteries. Okay, there are, as you see in your textbook diagram also, there are spiral artery, and what is the other artery which is just below like this, यहाँ पे रहते हैं. Basal artery. Basal artery. Very good. ना, वेरी गुड. सो ये स्ट्रक्चर को हम पहले समझ रहे हैं. ये जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है इसके बारे में हम समझ रहे हैं. These what you're seeing as gaps are actually the gaps of the glands present there, and then every such segment is well nourished with arteries. There are spiral arteries and there are basal arteries. Okay, and there are vein also. Now we are talking about the gland, especially that active proliferation के टाइम पे क्या होता है. अब आप देखो ये ग्लैंड का लेंथ देखो, देखो बढ़ता जा रहा है. ग्लैंड का लेंथ बढ़ रहा है और ये सीधा रहता है. इट रिमेन्स लाइक दिस. ठीक है. So this is the first point to understand, that there is a generalized active proliferation. The meaning of generalized is it is not in just one 5 centimeter area in the endometrium. सब जगह होगा. एंडोमेट्रियम के पूरे जगह पे आप ये पाएंगे कि इस तरीके से प्रोलिफरेशन हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, cells of endometrial stroma are arranged in following layers. Okay, what are the layers that are there from superficial to deep? If we have to say about the cells, how they are separated or how you can distinguish them is, first is stratum compactum. Okay, the most superficial layer that you would find will be called stratum compactum. ठीक है. उसके बाद में next what is it called? It is called stratum spongiosum. ठीक है. The next is called stratum, that means यहाँ अगर stratum compactum है, the next that is the stratum spongiosum. ठीक है. और सबसे नीचे जो है वो stratum basalis. So in this diagram it has been described here also. You can understand, you can see compacta is actually standing for compactum, spongiosa spongiosum, and ये basalis. तो तीन आपको लेयर्स दिखेंगे. जोना यानी लेयर्स. तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट, पहली पॉइंट आपने डिस्क्राइब की है कि ग्लैंड अपनी लंबाई में बढ़ने लगता है 1 to 3 millimeter. It becomes 1 to 3 millimeter in height. Length increases and it remains straight. Okay. Next thing that you have to describe, अभी ग्लैंड समझा दिया, उसके बाद में इस स्ट्रक्चर को समझाना है कि ये स्ट्रक्चर के सुपरफिशियली क्या रहता है. सुपरफिशियली इट इज कॉल्ड, द लेयर इज कॉल्ड स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, बिलो इट इज स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम, एंड बिलो इट विल बी कॉल्ड स्ट्रैटम बेसालिस या बेसल, which is also meaning deep basal layer. Okay. Besides that, you can also describe, you can draw the arteries here. You can draw spiral artery as it is given in your textbook. You can draw the basal artery. You can draw the vein here. So all these things will be labeled also very well. This place you can occupy to label those things. अब 2 points समझा दिया. Then changes in the face occurs under the influence of estrogen derived from
maturing ovarian follicles, right? So all this is happening under the influence of whom? यहां से यहां तक जो कुछ हो रहा है किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? मुर्तजा अली, Murtuza Ali is there in class. Adarsh, No, ma'am. okay. Yogita Sharma, Yes, ma'am. Yes. good. So Yogita Sharma, my question is, logically thinking, this matches at the same time when ovarian cycle में follicular phase चल रहा है. So this part of proliferation is influenced by which hormone? यहाँ तक कौन सा हार्मोन इस सारे चेंजेस को इन्फ्लुएंस करता है? You have to try to use logic instead of trying to by heart it. यहाँ पे कौन सा हार्मोन इसको बड़ा होने में मदद कर रहा था? योगिता? Ma'am, estrogen. Ma'am, may Very I? good. Very good. Yogita has answered estrogen. That is the correct answer. Right? तो यहाँ पे यही फेज चल रहा है ना, तो ये ओवरीज में ये फेज चल रहा है जिसके वजह से follicles are growing. They are secreting estrogen and they are also growing under the influence of estrogen. Same estrogen is also helping in this phase. It is helping in changes in the phase that is seen. This is derived from the maturing ovarian follicles. तो आपने काफी डिस्क्रिप्शन कर दिया, तो ये पॉइंट वाइज आपको एलैबोरेट करना है, ठीक है? Once all this description is over, that the gland increases in length, then you tell about the structure, then you tell about the different layers, then you tell about the hormones that is influencing in this phase. The last thing that you will explain is that this phase lasts for how many days? 14 days. 14 days. 20 days. 14 days. Okay, my question is, so this phase, what is it matching with in ovarian cycle? टीना शर्मा, ये फेज का खत्म होना ओवेरियन साइकिल में कौन सा फेज है? जब ये फेज यहाँ खत्म होता है, टीना शर्मा? मैम फॉलिकुलर फेज. हाँ, फॉलिकुलर फेज खत्म होता है ना? तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. ये वही समय है जब हमने पढ़ा था कि 14 दिन में ये ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है? दैट इज द टाइम दिस आल्सो हैज रीच्ड टिल हियर. 14 डेज आपके जो है प्रोलिफरेटिव फेज होते हैं, ठीक है? Now after this phase is over, the next phase that you see is the secretory phase. Is the secretory phase. Now in the uterine cycle, the secretory phase is also called progestational phase. Okay? Why we can say that it is called progestational phase? What is released by the corpus luteum in the luteal phase? Suman Yadav. सुमन यादव. आदर्श है या नहीं बता दो, क्योंकि ज्वाइन तो किया था क्लास, कब निकल के गए पता नहीं. शी इज देयर? शिवानी यादव.
Yes, ma'am. Suman is there. Suman, very Yes, ma'am, easy but- question. Suman has sent a chat, or who has sent a chat? I can't see. Suman, can you send a message in case if the problem is with your mic? What hormone is released by corpus luteum? नेहा रजोरा का मैंने सुमन को चांस दिया था बेटा, ठीक है, ओके. Neha's answer is correct. Gunjan wants to answer, so there are students who wants to answer. सुमन मेरे से कट्टी है बिल्कुल भी, ठीक है, कोई बात नहीं, बेचारी मैडम. ओके, वी आर हियर. सिक्रेटरी फेस, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, राइट? तो we can say it is rightly called, secretory phase is also called progestational phase. Okay, now here we have to describe the progestational phase. What all happens in the progestational phase? The first thing that happens is growth of the endometrium. ठीक है, ये और ग्रो होने लगता है. अब देखो 3 से बढ़ के अब इसकी हाइट बढ़ गई है 7 मिलीमीटर तक थिक हो चुका है. ठीक है, 7 मिलीमीटर तो अंदाजा लगा लो 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर होता है. 10 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर कम, तो उतना थिकनेस एंडोमेट्रियम का बन जाता है. ठीक है, that much it becomes thick. So we have seen in this, first you will describe that there is further growth, then you will say the height increases up to how much? Shivani Yadav. Shivani Yadav. Ma'am, she is not there. Okay. Shaili Singh. Ma'am, 5 to 7 millimeter. Yes, 5 to 7 मिलीमीटर थिकनेस तक जा रहा है. पहले कितना था सारिका? Sarika is there? Yes, ma'am. हाँ, Sarika. She is there. Okay, whoever is the student helping me out along with Adarsh, thank you. Ma'am, Gunjan Bhatti. Gunjan, okay. Ma'am, सारिका ने लीव कर दिया अचानक से. Okay. सहज कौशल. मैम ये भी नहीं है. ऐसे जाते जाएंगे तो मेरी क्लास खाली हो जाएगी. रिंकी. Yes, ma'am. हाँ, अभी तो 5 to 7 मिलीमीटर था, पहले कितना था इस स्टेज में? 1 to 3 millimeter. वेरी गुड, 1 to 3 मिलीमीटर. ठीक है, तो ये हो गया, हमने ये भी डिस्क्राइब कर दिया कि थिकनेस बढ़ गई. अब ये जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं, आप देखो यहाँ के कंपैरिजन में इसको थोड़ा ब्रॉड और ड्रॉ करना. ठीक है, सो दे बिकम ब्रॉड. Okay, they become broad, and a very nice diagram is given in your book. They have shown a comparison of height and how it becomes broad also. Uterine glands at various stages of menstrual cycle बताया है, उसमें they have shown the height, how it is gradually increasing, and how the gland na this place. Did you see the diagram? Did you get it? 3 glands, uterine gland stages have shown. Yes. है ना, काफी क्लियर है. यहाँ पर तो इतना थिन था और छोटा था, अब यहाँ पे आ रहा है ये लंबा भी है और थिक भी है. यहाँ आते तो हाइट भी ज्यादा है और थिकनेस भी
ज़्यादा है. So this also has to be mentioned, okay, that the endometrial glands become dilated and convoluted. Convoluted का मतलब है जो आप उस डायग्राम में देख रहे हो वैसे ही जो ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, इट इज नॉट स्ट्रेट ना, तो इस तरीके से फॉर्म हो रहा है. दिस इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशंस. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी, there is increased amount of tissue fluid in the stroma. Okay, there is increased amount of tissue fluid in the stroma. Now the stromal cells, when they are increasing, increase in size of the stromal cell occurs due to accumulation of what all things, see, glycogen and lipid droplets in the cytoplasm. Okay, these are the various changes that are happening in it. So once you have described the glands, how the gland is increasing in length, increasing in breadth, then you can go ahead by describing the stroma of the endometrium. Okay, so first we need to know what is it. Endometrial stroma, what we say is all that area, na, your connective tissues all are there in the endometrium layer, right? So that area that we are talking about, what happens in it, the fluid starts filling. Okay, the fluid is increased in this area. So now size of stromal cell increases. Size of the stromal cell is increasing. What is the reason for increase in size of stromal cell? It's because of two things. ग्लाइकोजन उसमें इकट्ठा हो रहा है, लिपिड्स उसमें इकट्ठा हो रहा है, राइट? सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई इट इज इंक्रीजिंग. ठीक है. सो फर्स्ट, बिफोर यू गेट कंफ्यूज, प्लीज रिमेंबर we have mentioned the various layers in 3 layers. Otherwise, overall we say that the endometrium, this endometrium that you are seeing, consists of layers of columnar epithelium and stroma also is present na. This जो area है यहाँ पर basal areas में. So what happens to it? This stroma is actually the layer of connective tissue. Okay, and this part also, under the influence of hormone, it can increase in thickness. Okay, so this has to be understood. You have understood as zona, 3 layers, zona compacta, or we say stratum compactum, stratum spongiosum and basalis. तो खास करके यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये सारे कॉलमनार एपिथेलियम है प्लस स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है उसमें. ठीक है. तो ये एरिया में जो स्ट्रोमा है उस सब में क्या भर रहा है बच्चों? उसका साइज क्यों बढ़ रहा है? Accumulation of glycogen and lipids. Yes, this area, it is increasing in height, because of glycogen and lipid droplets. Now this change in the stroma cell, is known as decidual reaction. ठीक है. इसको क्या कहते हैं? Decidual reaction. Okay, next, this phase is influenced by progesterone hormone secreted by, because we are calling it as progestational phase. तो याद रखना कि पूरे डिस्क्रिप्शन के बाद आपको वो भी कहना है कि ये जो फेज है ये किस हार्मोन से इन्फ्लुएंस हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन, which is secreted by corpus luteum of the ovary. Okay, now this phase again,
अब यहाँ पर तो अप्रोक्सीमेटली 14 डेज हो गए, और ये जो फेज है ये भी 14 डेज के लिए अप्रोक्सीमेट चलता है. दिस इज द रीजन स्टूडेंट्स वी से कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का, 14 + 14 इट इज कमिंग अप टू 28 डे. ठीक है. एंड व्हाट हैपेंस हियर, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पर हम पहुंच गए हैं. By the end of progesterone phase, what happens? We know that if pregnancy doesn't occur, what will happen to the corpus luteum? Next person. My mobile is friendly with you all. It in between closes your list. Neha Rajora. नेहा रजोरा. अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करना, क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम के साथ? नेहा रजोरा. Ma'am, regressing rapidly after 24 days of the cycle. Ma'am, it eventually replaced by whitish colored scar tissue called. हाँ, रिग्रेस होता है ना. इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस इन साइज. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था वो रिलीज नहीं कर पाएगा. तो क्या होगा, यहाँ आते आते प्रोजेस्टेरोन का लेवल अब कम होने स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. द प्रोजेस्टेरोन लेवल, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन डिक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, द progesterone phase starts ending. Where is my pointer? The progesterone phase starts ending and even the endometrium starts regressing. यहाँ पे जैसे corpus luteum regress होते जा रहा है वैसे ही endometrium भी regress होगा. ठीक है. अगर प्रेगनेंसी होता तो ये भी ठीक रहता, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता, और प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ये जो बेडिंग है पूरी एंडोमेट्रियम की ये भी बना रहता है ना. पर अब क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे छोटा होके कॉर्पस एल्बिकन्स हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, एंड देन वी विल सी दैट दिस ऑल्सो स्टार्ट्स, दिस इतना सारा जो इसने तैयारी किया, अब दिस ऑल्सो स्टार्ट्स decreasing. Okay, we have come to the last phase which is called the menstrual phase. Okay, menstrual phase once it starts, that means ये 28 दिन की साइकिल हो गई, किसी किसी में 30 डेज का साइकिल हो गया, maximum 28 to 30, that is what we see average. After that the menstrual phase starts. This is the phase which is called the secretory phase. राइट. सेक्रेटरी फेज के बाद में फॉलो करता है which is called, sorry, this is the menstrual phase and it is characterized by shedding of stratum compactum and stratum spongiosum of endometrium along with some amount of blood. ठीक है. तो अब ये फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर ये दोनों निकलकर शेड होना स्टार्ट करते हैं और ब्लड भी शेड होता है. दिस इज अबाउट एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज 50 to 60 ml. Okay. Now, onset of menstrual phase occurs due to decreased concentration of estrogen. Am I right? No, ma'am. No, ma'am. No, Progesterone. So the hormone is progesterone. है ना? हाँ, that means menstrual phase में ये सब जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन की कमी के वजह से ये सब हो रहा है. ठीक है. And then duration of menstrual cycle on an average is 28 days. We know duration of cycle is estimated from the first day of the menstrual bleeding
ठीक है. So that is why you are seeing, suppose this is the first day of the menstrual bleeding, right? This is the first day of the menstrual bleeding to the onset of menstrual bleeding in the next cycle. ठीक है. That is the whole duration that we say. When we say the complete cycle, we will start from 0. ये हो गया, फिर ये 14 दिन तक गया, ओव्यूलेशन हुआ, इंतजार किया, यहाँ पर नहीं हुआ, फिर कॉर्पस लूटियम रिग्रेस होने लगा, राइट. पहले तो उसके इन्फ्लुएंस में ये बेडिंग जैसा ये सब तैयार हो गया. ओके, टेल मी व्हाई इज इट गेटिंग रेडी? 1 minute, I will ask. Nidhi Maurya. Why is all this getting ready first of all? इतना सब तैयारी किस लिए हो रहा है? निधि मौर्य. निधि बोलो, माइक ऑन है. Nidhi, you can send a chat. Who has sent? Nidhi has sent, no? What is it? गुंजन का हाथ है क्या ये? अच्छा, हाँ गुंजन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं मैम, मेरे को आंसर देना है ना. हाँ बोलो बोलो. मैम, ओवम को रिमूव करने के लिए जब प्रेगनेंसी नहीं होती है. हाँ, ओवम को रिमूव करने के लिए नहीं कहेंगे हम. वी कैन थिंक इट इन अ रिवर्स वे, दैट द होल तैयारी वर्ड बोल रही हूँ, रेडीनेस, ऑल द होल रेडीनेस और गेटिंग रेडी पार्ट ऑफ द यूट्रस इज डन टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड जाइगोट, है ना? हाँ, फर्टिलाइज्ड ओवम. तो वो जाइगोट जो वहां पर आके वो इम्प्लांट होगा, उसके लिए वो पूरा नरिशमेंट देता है, उसके लिए ये तैयारी किया हुआ. ठीक है. अब सिक्रेटरी फेज कितने दिन के लिए रहता है? दीपक सिंह. सिक्रेटरी फेज कितने दिन के लिए रहता है? The secretory phase is for how many days? Deepak Singh, you can send a chat in case you are not able to answer.